Welcome student. In this video, we are trying to complete our practical number 7B, that is developing a simple visitor statistics application using the message driven bean. Now message driven bean का application develop करना तो पहले देखेंगे message driven bean क्या होता है. तो I am just trying to Google it out. Message driven bean in EJB and just looking at some kind of images of message driven bean. So you can see in these images, the message-driven bean is using two concepts. One is going to be queue and second is going to be topic. तो एक concept आता है queue का, दूसरा concept आता है that is going to be of topic का. Working देखो होता कैसा है कि you will be using the JMS, that is Java Messaging Services, and JNDI, that is called as Java Naming Directory Interface. Theory lecture में बहुत सारी चीजें हम लोगों ने ये discuss किया हुआ है how exactly the things are being calculated and how the JMS has been working. So in this video, I will just try to discuss that how to complete the practicals of that. So please start focusing on this practical aspect of the message driven bean. So here I'm going to file, selecting the option called a new project. I am selecting our regular Java web application and given a click on next. Further name of the application I'd given as practical 7B. Then given a click on next, selecting the Glassfish server, and finally given a click on finish, and our new project practical 7B is being developed. What we are interested? We are interested in using a message driven bean, and a servlet will be trying to communicate with a message driven bean. We are not using broadcasting, that is topics. We are using the one-to-one connection that is called as queues. So let's try to focus on the same. I need to create my message driven bean. So I give a right click on the new and selecting the option over here as what here message driven bean. It asks me what is the name of this message driven bean. So I may be given the name of the message driven bean as testing message bean. And the package name I had given our favorite package name, that is com.test. And the project destination need to be added over here. So I create a new project destination. I am not using topic, I am using queues. Queues is for point-to-one connection and topic is for broadcasting. So I am providing a destination name as my destination. Then given a click on OK. So a new destination got created called a JMS / my destination. And server destination is going to be JMS testing message. I am okay with the project destination only. And finally I had given a click on next. Acknowledgement mode is auto. The destination type is queue. It is not going to be a topic. And the subscription durability is going to be non-durable. Finally, I'd given a click on finish. So we'll find our enterprise bean, where we are finding a testing message driven bean is being created. And a lot of configurations are being automatically given by whom? By the NetBeans to us. Now, please look at it. You need to deploy the application to test really it works fine or not. Just deploy the application. Few things which need to be seen by us. Sir, ye jo tha option which has been created by us, that is called as my destination, etc., where all these are being created. So after deploying the application to our Glassfish server, just give a right click on this Glassfish server and select the option called as View Domain Admin Console. When you are going to the Domain Admin Console, you are going towards Glassfish Server Administration Console, where the current version of the Glassfish open source is going to be 4.1.1 और यहाँ पे आपका पोर्ट है 4848 करके, right? So please start focusing where we can see all these options. So you will find the different options which have been given by the Glassfish. In this, under the application, you will find your practical number 7B. So under the 7B, you will find our status being enabled. So our application been deployed successfully. You will find over here the option named as JMS resources, that is Java Messaging Service Resources. And under this JMS resources, under the connection factories, you will find our testing message factory is what been developed by me in an earlier project. But over here, you will find the option called apna testing message factory tha. So testing message factory is also been created over here. This is also been enabled. And our destination resources, that is testing message, is also been
इनेबल्ड, तो दोनों इनेबल्ड है या नहीं है उतना देख लेने का. बाय डिफॉल्ट इनेबल्ड ही होता है, सो यू डोंट रिक्वायर टू वर्क एनीवेयर इन दिस पर्टिकुलर JMS अलॉट. यहां तक हो गया. चलो, माय एप्लीकेशन बीन डिप्लॉयड प्रॉपर्ली एंड आई वुड लाइक to go for providing some of the contains into this. So I would like to see on message, matlab whenever the client side is providing the message towards the JMS with the help of the queue or with the help of the topic. Topic गया मतलब broadcasted हो जाएगा, queue गया मतलब 1-to-1 point में connection चला जाएगा. So on message is getting fired. अभी ऑन मैसेज में विजिटर स्टेटस इस एप्लीकेशन में क्या करूं, जितने मैसेजेस आए उसका काउंट करके दिखाता हूं और सभी मैसेज को डिस्प्ले करके दिखाता हूं. सो फॉर दैट रीजन वी आर जस्ट यूजिंग आवर टेक्स्ट मैसेज. सो टेक्स्ट मैसेज इज अगेन अ क्लास प्रोवाइडेड बाय द JMS. सो आई एम प्रोवाइडिंग टेक्स्ट मैसेज TM इक्वल टू टाइपकास्ट कर लिया इन द टेक्स्ट मैसेज. सर मैसेज क्या है? मैसेज इज द इंटरफेस रे. सो आई रिक्वायर टू टाइपकास्ट इट टुवर्ड्स व्हाट योर टेक्स्ट मैसेज and then providing the message. Now whatever the text message which has been received, I would like to display the message which has been received. तो उसका text display होना चाहिए, उसका count display होना चाहिए. उसका text display होना चाहिए, उसका count display होना चाहिए. तो what I'm doing, I'm just going to display over here maybe system.out.println received message plus, and here I'm providing our object name is tm dot get text. So get text will be what? Returning the message which has been received by the client through the Java messaging services. चलो यहाँ तक तो करके हो गया. एंड चलो एक काउंट भी डिस्प्ले करना है तो काउंट भी हम लोग डिस्प्ले कर सकते. कुछ एरर आ रहा है यहाँ पे, देख लेते हैं. व्हाट इज द एरर? इट सेज दैट अनरिपोर्टेड एक्सेप्शन, दैट मींस दिस कोड मस्ट बी रिटन इनसाइड ए ट्राई कैच. अगर वो ट्राई कैच के अंदर लिखा नहीं, दैट विल बी ऑलवेज जनरेटिंग द issues to us. So you can just go towards what we can say right click and you can go for specify insert code, and in the insert code you can specify surrounded by using a try catch, or otherwise easily you can just write your own try catch over here. So I am just writing try and followed by the catch exception EX, and if any exception occurs that must be displayed. So I am displaying system.out.println. So on a server you will find the messages are being received. So out.println, and here I am providing error plus ex dot get message, right? So ये करना भूलना नहीं है कि आपको ट्राई कैच के अंदर डालना है, अदरवाइज वो एक्सेप्शन जनरेट करेगा. सो माय मैसेज ड्रिवन बीन इज व्हाट बीन डेवलप. अब विजिटर स्टैटिस्टिक में आप काउंट ले लो, काउंट को एक एक करके प्लस करो, दैट इज योर लॉजिक. तो आप जितना, और या फिर आपके कॉलेज में जो स्पेसिफिकेशन दिया होगा कि ये पैटर्न में डेवलप करना है, वो पैटर्न में डेवलप करो. बट इन दिस प्रोग्राम आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग यू हाउ द JMS वर्क्स. सो फाइन. सो मैसेज ड्रिवन बीन इज बीन डेवलप्ड बाय अस, एंड नाउ वी नीड टू डेवलप द क्लाइंट which will be sending the message to the JMS service towards our message driven bean. और जब भी मैसेज रिसीव होगा तो ऑन मैसेज मेथड कॉल होगा, एंड ऑन मैसेज मेथड सर्वर साइड में डिस्प्ले करेगा रिसीव्ड मैसेज, एंड जो मैसेज हम लोग ने पास किया रहेगा वो मैसेज सर्वर के यहाँ पे क्या होगा? डिस्प्ले होगा. सो दिस इज द सिंपल टास्क. सो हियर client side I can create any other application. I am able to go for creating the servlet. So here I am interested in developing what? Servlet for the same. How can I develop a servlet? Everybody knows. Give a right click, select the option new, select the option as servlet, and give a name of it. I just give a name of the servlet as testing servlet for message driven bean, MDB. Fine. And the package name I'm using the same one, that is com.test. No additional information because I'm using annotation based system on a servlet. I'm not using XML based system. इसलिए यहाँ पे एनोटेशन हम लोग उसको फॉलो करते हैं, राइट? अगर ये निकाल दोगे तो सर्वलेट रन होगा नहीं, फिर आपको XML बेस में web.xml में कंटेंट डालना पड़ेगा. तो चलो यहाँ तक तो हो गया. और चलो प्रोसेस रिक्वेस्ट के अंदर का जो कोड है, आई एम जस्ट इंटरेस्टेड इन कीपिंग द सेम, एंड यहाँ पे मैं कोड लिख देता हूँ. द कोड विच इज बीन यूज फॉर द सेक ऑफ व्हाट मैसेज ड्रिवन बीन, फॉर सेंडिंग द मैसेज टुवर्ड द मैसेज ड्रिवन बीन. सबसे इंपॉर्टेंट टास्क है, अगर वो सब चीजें करना है तो आपके क्लास में आपके पास कुछ मेंबर वेरिएबल चाहिए जिसके हेल्प से आप JMS को एक्सेस कर पाए. आइदर यू आर एबल टू गो फॉर क्रिएटिंग द मेंबर वेरिएबल बाय योर ओन, एंड यू कैन यूटिलाइज द फीचर्स गिवन बाय द NetBean. आई एम इंटरेस्टेड इन यूटिलाइजिंग द फीचर गिवन बाय NetBean, so I give a right click over here,
selected the option as insert code. Here it shows me send a JMS message. So I just give a click on send a JMS message. It says this is your project destination where you are getting this particular message driven bean. I just say yes. This is the same one which is with me. I had given a click on what here. Okay. So you'll find one queue has been created and one context has been created. The context is being used for the sake of sending the message with the help of the queue, and the name of the queue which is over here is what here my destination. So this is only the queue which I am using for the sake of sending the message. तो चलो देखते हैं भाई सच में मैसेज सेंड होता है कि नहीं होता है. How can I send a message? First of all, again the same issues. It has to be written inside a try catch. If not, then it will be again generating the error that this code is generating some exception. So it must be written inside a try catch. So I'm writing try catch exception EX, and in the catch I may be writing it over here as system dot, or I can use out.println, and here providing the message over here as error plus ex dot get message. तो चलो यहां तक तो करके हो गया. Now in the try block I need to write the code which will be sending the message. How many messages you would like to send? Suppose I would like to send some 4 messages. So for that reason I am using one for loop by saying for int I equal to 1 till I less than equal to 4 and I plus plus. Otherwise what is going to happen? Each client when it connects, he will be sending one message. Client got connected. So statistics says okay, one client got added, second client got added, third client got added and so on. अभी मैं 4 क्लाइंट क्रिएट नहीं करता तो एक ही जगह पे फॉर लूप में मैं क्या कर रहा हूँ 4 क्लाइंट को एक साथ ही भेज रहा हूँ. तो देखते हैं कि आपका सर्वर साइड में मैसेजेस सच में रिसीव होकर प्रोसेस हो रहा है कि नहीं हो रहा है. सो आई नीड टू नाउ सेंड अ मैसेज बाय यूजिंग द जेएमएस. अपना जेएमएस का ऑब्जेक्ट नेम कॉन्टेक्स्ट का क्या था? अब कॉन्टेक्स्ट करके ऑब्जेक्ट नेम था. सो आई एम यूजिंग द सेम ऑब्जेक्ट नेम ओवर हियर एज व्हाट हियर कॉन्टेक्स्ट. सो आई एम प्रोवाइडिंग कॉन्टेक्स्ट dot. Here I require to go for what? Create producer. So create producer is what? Create the new JMS producer object which can be used to configure and send a message. So create process producer and dot. I am using the method called as what here send. तो send में आपको क्या करना है? Destination टाइप करना है, कहाँ पे जाना चाहिए और कौन सा मैसेज जाना चाहिए. अभी कहाँ पे जाना चाहिए वो अपना क्यू का नाम है और आपके क्यू का नाम क्या था? यहां पे देख रहे हो. अब आपके क्यू का नाम था माई डेस्टिनेशन, राइट? सो दिस इज व्हाट वी कैन सी योर माई डेस्टिनेशन विच इज द क्यू. सो आई यूज द सेम माई डेस्टिनेशन ओवर हियर फॉलोड बाय माय मैसेज. तो आई विल जस्ट क्रिएट वन स्ट्रिंग वेरिएबल बाय सेइंग स्ट्रिंग मैसेज इक्वल टू सेंडिंग वन विजिटर और सेंडिंग plus I plus visitor, right? So sending one visitor, sending second visitor, sending third visitor and so on. तो सेमीकोलन डाल दिया. मैसेज भी क्या हो गया अब आप लोगों का सेंड हो गया. और सब मैसेज होने के बाद में हम लोग को चाहिए कि कुछ सर्वलेट पे मैसेज आए. तो मैं यहाँ पे लिखता हूं out.println all messages are sent. इतना ही करना है हम लोगों को. चलो देखते हैं कि सच में सर्वर साइड में ये सब कॉल होता है बराबर से कि नहीं होता है. तो मैं आउटपुट में चला गया. प्लीज यू हैव टू सी द आउटपुट ओवर हियर ऑन अ ग्लासफिश सर्वर. तो लेट्स ट्राई टू फोकस. सो आई गिव अ राइट क्लिक ऑन दिस एंड ट्राई टू गो फॉर कॉलिंग द सर्वलेट. वंस आई कॉल द सर्वलेट, लुक एट द आउटपुट ओवर हियर. Sorry, it says all messages sent. And if you're looking over here, it shows me received message, sending second visitor, sending one visitor, sending 3 visitors, sending 4 visitors. So this way you are using the JMS for the sake of sending the messages. Now this JMS can have a lot of business logic. कि कुछ भी आ गया उसके पास मैसेज तो उसको डेटाबेस में स्टोर करना है या फिर और आगे जाके ब्रॉडकास्ट करना है. तो JMS से रिलेटेड सभी एप्लीकेशन को सेम मैसेज हम लोग क्या कर सकते हैं? पास कर सकते हैं. एंड वी आर एबल टू गो फॉर कंप्लीटिंग सम बिजनेस लॉजिक बिहाइंड इट. सो दिस इज व्हाट एक्सपेक्टेड इन दिस प्रैक्टिकल नंबर 7B. सो क्लास थियरी तो हम लोग डिस्कस किया ही था. अभी प्रैक्टिकल एक बार वापस आपको करके दिखाया है वीडियो में. तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड वी आर कमिंग अप विद द नोट्स ऑफ जावा ऑल्सो. I will be discussing those notes also with you that will help you to gain
as much better marks as you can in your theory exams also. Thanks a lot.